display the web application. What is it? So when you design any web application, आप कॉपी लाए हो? Good. Okay, so we design the web application. Copy answer. So while designing a web application, we create a web application. One is HTML over HTTP by using of CGI application, servlets, then Java server pages technology, then JSTL, XML, Struct, and Java server faces technology. So basically, as you know that for designing the web application, any web application, we require the HTML. Then in earlier development, okay, आगे जो डेवलपमेंट होता था उसको हम CGI एप्लीकेशन बोलते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस. व्हाट इज दैट वी डिस्कस एलाबोरेटली. नाउ CGI में कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी coming to the market. Then we're using JSP, Java server pages. याद रखना, in market there is a 3 server pages are there. One is ASP, active server pages. Another is JSP, Java server pages. Another is hypertext preprocessor, that is called as the PHP. ये तीनों जो स्क्रिप्टिंग है इसको बोला जाता है, इट इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. मींस वो स्क्रिप्टिंग को रन करने के लिए आपको सर्वर चाहिए. देन वी आर यूजिंग ए XML, extensible markup language. We know there is a 2 type of languages we are using. One is your programming language, another is your markup language. Programming language is used to giving a functionality to your application. Markup language is used to represent your information. आपका इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज चाहिए. In between, XML is one of them. It is called the extensible markup language. As because why it is so much popular, जैसे कि सपोज आप एक नॉर्मल टच की पैड मोबाइल से मैसेज भेजोगे एंड्रॉइड सेट में तो आपका मैसेज जाता है. So it will convert all your information in a common format. That common format is called as XML. And that XML data can be transferable to other applications. Next is Struct application. Struct is a framework. Okay, framework means it is a platform where you can design your application. Next is Java server faces. So these are all the things we cover in our curriculum. Okay, so all the technology that is present in the Java, in advanced Java, so we will cover this, all the technology. Then first of all, Java, core Java is called as the Java standard edition. Advanced Java, which is used for designing the website application, web-based application. तो इसके लिए हमको चाहिए Java Enterprise Edition, that is called the Java EE. That is an Enterprise Edition. It is an industry standard for developing a portable, robust, scalable, secure server-side Java application. Enterprise sector में, enterprise मतलब जो कंपनी में आपका काम होता है. So all are developed by using Java EE, Java Enterprise Edition. Java EE is a set of coordinate technology which includes the following application technology. EE में क्या क्या रहता है? Now you have the Java servlet, you have the Java server pages, you have the
Java server pages, standard tag library. You have Java server faces. So these are the technology we're using. Now comes to that, what is website? Website is a collection of static file, HTML pages, graphic file, and various other files. Website is a collection of static file. Static file means which is not interacting with the user. Okay, मतलब आज वो पेज ओपन करो जिस तरह से होता है, कल भी ओपन करो उस तरह से रहेगा. It is not having any kind of changes. Okay, so which is not interacting to the user, which page is not interacting with the user, so that is called as what? Your you can say static page. Static page. Yes. Dynamic page, which is interacting with the user, like it is asking you login ID and password. So based upon your login ID and password, your page is open. Web application is a website with dynamic functionality on the server. Dynamic functionality on the server means that is interacting with the user. A web application runs a program on the server. How the web application is run? What other things are there? First of all, a browser makes a request to the server for HTML form. तो नॉर्मली आप देखो, आप जब ब्राउजर में कोई वेबसाइट का रिक्वेस्ट भेजते हो, सपोज www.facebook.com, so we are requesting for a page, okay, for a HTML form. Suppose I am giving a request for the Gmail. I am requesting for a form, Gmail form. So Gmail is coming to me. The server responds by sending the HTML form back to the browser in the HTTP request string. फिर आप क्या करते हो ना, सर्वर को फिर रेस्पॉन्स भेजते हो. कैसे रेस्पॉन्स भेजते हो ना, बाय गिविंग योर आईडी एंड पासवर्ड. सो बाय गिविंग योर आईडी एंड पासवर्ड, again your response is going to there. Next, the browser sends another request with the data from the HTML form. Response आ गया, फिर आप डेटा दे दिए, फिर सर्वर को चला गया. सर्वर प्रोसेस करता है, it will check that your ID and password is correct or not. If your ID and password is correct, it is retrieve whole the page and it is return you. Okay, so they are the Yes, sir. technology or in which way your web application is processed. Any doubt? No, sir. No, sir. Ankita? No, sir. No doubt. Now in earlier development, जब पहले आपका वेबसाइट बनाया जाता था, तो पहले हम यूज करते थे CGI एप्लीकेशन, कॉमन गेटवे इंटरफेस. ये एप्लीकेशन ये एर्लियर डेवलपमेंट में हम यूज करते थे. इसमें क्या होता था ना, आप एक रिक्वेस्ट भेजे, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपके लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, फिर और एक यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा और एक रिक्वेस्ट क्रिएट होगा, उसके लिए और एक पाथ हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड दैट पॉइंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितना यूजर रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर, उतना CGI सेल क्रिएट होता है. जो मेमोरी होता है उसको बोलते हैं CGI सेल. CGI cell creation in a web application is a heavy weight tax for a server. अगर ये रिक्वेस्ट 5000 से ज्यादा होता है तो आपका सर्वर करप्ट हो जाता है और क्रैश हो जाता है, इसको बोलते हैं. द सर्वर इज अनेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट. इतना रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाएगा. ओके, बट एट दैट टाइमिंग CGI प्रोग्राम इज वेरी सिंपल. कोई भी प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन बना सकता था CGI को यूज करके. So it is a what you can say, it is a type of programmer friendly. Okay, then as it is having a problem, ये जो CGI सेल बहुत सारा क्रिएट करता है, तो देखो एक रिक्वेस्ट भेजा, एक CGI सेल,
फिर एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर एक सीजीआई सेल, फिर एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर एक सीजीआई सेल। आप जितना रिक्वेस्ट भेजो उतना सीजीआई सेल क्रिएट होता है। सो दैट इज द हेवी वेट टैग। ओके, दिस वन सीजीआई सीजीआई, एक रिक्वेस्ट भेजा सीजीआई सेल, अनदर रिक्वेस्ट सीजीआई सेल, अनदर रिक्वेस्ट देन सीजीआई सेल। ओके, तो ये जब ये क्या होता है ना, देखो प्रोसेसर में लोड होता है, इसलिए आपका क्या हो गया, रेड हो गया। सीजीआई सेल क्रिएशन इज ए हेवी वेट टेस्ट। देन अभी सर्वलेट क्या करेगा, तो सर्वलेट किस यार, सर्वलेट इज ए जावा टेक्नोलॉजी क्लास विच इज यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन इन जावा, जो हम कोर जावा में थोड़ा पढ़े थे। सर्वलेट ये जो डिमेरिट को थोड़ा हटाता है, ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट को एक सेल क्रिएट करता है, लेकिन यहां पर आप जब रिक्वेस्ट भेजोगे वहां पर एक वेब कंटेनर क्रिएट होता है, इट क्रिएट ए वेब कंटेनर। तो एक वेब कंटेनर में आप बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हो, बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट इज प्रोसेस बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन ए थ्रेड प्रोसेस। थ्रेड इज इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोग्राम। ओके, तो यहां पर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। ओके, बंद कर दो। So now, in earlier development of application, so Gibson heading, ओके। तो नॉर्मली हम जब एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। एक है हमको यूजर इंटरफेस बनाना चाहिए, एक है बिजनेस लॉजिक, और एक होता है डेटाबेस। ओके, तो इस तीनों को हैंडल करने के लिए तीनों स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, लाइक एंटायर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। लेकिन यहाँ पर जो तीनों चीज है वो क्लाइंट में हैंडल होगा, मतलब सारे चीज एक ही जगह पर लिखा जाएगा। यूजर इंटरफेस के लिए, डिजाइन के लिए लिखा जाएगा, कोडिंग प्रोसेस, बिजनेस लॉजिक प्रोसेस करने के लिए वही एक ही पेज रहेगा, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी एक पेज में रहेगा। सारा चीज आप एक जगह पर हैंडल करोगे, तो इसलिए क्या होता है, क्लाइंट में ज्यादा लोड पड़ता है, तो आपका वेब एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग वेरी स्लो हो जाता है बाय यूजिंग ऑफ सीजीआई एप्लीकेशन। ओके, तो राइट, व्हाट इज सीजीआई एप्लीकेशन? In early development of HTML, okay, so in early in the development of HTML, the
designers create a mechanism to permit a user to invoke a program on web server. Okay, so in early development of HTML, the designer create a mechanism to permit a user to invoke a program on the web server. Web server में आपका application run होगा. This mechanism is called CGI, or called as Common Gateway Interface. This called as the Common Gateway Interface. तो here what happened? यहाँ पर क्या होता है ना, usually the browser needs to send the data to a CGI program. तो browser request भेजते किसके पास ना, CGI program को. तो usually browser needs to send data to CGI program. हाँ किता अच्छा अच्छा मु रेकॉर्डिंग करूची नोट भी लिखुची पठेबी होला ट्राई करथाओ होला हम्म CGI program on the server. Okay, so usually browser needs to send data to the CGI program on the server. The CGI specification define, CGI क्या करता है, it define how the data is packaged. आपका डेटा कैसे एक मॉड्यूल में कन्वर्ट होगा, एक ही साथ भेजेगा. सो हाउ CGI specification define how the data packaged and sent in the HTTP request. So how your data is packaged and you have to provide the HTTP request. HTTP request to the server. सर्वर को कैसे HTTP request भेजेगा. This data usually typed into web browser
in an HTML form. Okay, the CGI specification define how the data packaged and sent in the HTTP request to the server. This data usually type in the web browser. मतलब जो डाटा आप ब्राउजर में भेजोगे, कौन सा डाटा? आपका आईडी और पासवर्ड. तो यू आर गिविंग योर आईडी पासवर्ड इन द HTML form. Okay. Yes, sir. Then next what happened? हाँ, ये लेयर का, हाँ. तो हम रिक्वेस्ट भेजे क्या ना, सपोज google.com और gmail.com. So the URL यहाँ पर होगा, the URL determines which CGI program to execute. तो कौन सा CGI प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करेगा वो URL में डिसाइड होगा. सपोज यू राइट www.gmail.com, so URL determine which CGI program to execute. This might be a script, वो script हो सकता है, और an executable और an executable file. ये क्या होता है ना, द URL डिटरमाइन कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये होगा आइदर इट इज ए स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूटेबल फाइल. द CGI प्रोग्राम देन क्या होता है उसके बाद, द CGI प्रोग्राम पर्जेस द CGI डाटा. तो CGI डाटा को पर्ज करेगा, purges the CGI data in the request and process the data and generate response, usually in HTML form or HTML page. Then the CGI responses, the CGI response is sent back to web browser, which wraps the response in HTTP
response. The HTTP response is sent to the sent back to the sent back to the web browser. Okay. So let's check here what it is display. Early development of HTML, the designer create a mechanism to permit a user to invoke a program on the web server. तो आपका जो वेब प्रोग्राम है, जो भी आप वेबसाइट बनाने के लिए जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, वो वेब सर्वर में इन्वोक होता है. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द कॉमन गेटवे इंटरफेस. यूजुअली क्या होता है ना, ब्राउजर नीड्स टू सेंड द डेटा टू द सीजीआई प्रोग्राम. ब्राउजर सीजीआई में डाटा भेजता है, ओके, टू द प्रोग्रामर ऑन द सर्वर. द सीजीआई स्पेसिफिकेशन डिफाइन, सीजीआई क्या करता है, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, इट विल डिफाइन हाउ द डेटा इज पैकेज, कैसे एक पैकेज में कन्वर्ट होगा, एक मॉड्यूल में कन्वर्ट होगा, और मॉड्यूल में कन्वर्ट होकर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एक एक मॉड्यूल में कन्वर्ट होकर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा. दिस डाटा यूजुअली टाइप इन द वेब ब्राउजर. कहां पर टाइप होता है ना, वेब ब्राउजर में आप टाइप करते हो. जैसे कि आप HTML फॉर्म हो गया, जैसे कि गूगल में आपको बोलता है गिव आईडी एंड पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड का एक पैकेज में वो ले लेता है, उसके बाद वो जाकर वैलिड होता है. द URL डिटरमाइन विच CGI प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, कौन सा CGI प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो URL इसको डिटरमाइन करेगा. दिस माइट बी ए स्क्रिप्ट हो सकता है, और कोई भी EXE फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, वो भी हो सकता है. द CGI प्रोग्राम purges the CGI data in request and process the data and generate the response. तो यहाँ पर CGI क्या करेगा ना, पर्जिंग करेगा. पर्जिंग मतलब कन्वर्ट करेगा. ओके, इट इज कन्वर्टिंग योर रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट द रेस्पॉन्स. आपका रेस्पॉन्स आकर आपको एक वेब पेज में और एक HTML पेज में आपका रेस्पॉन्स आपको सेंड करेगा. द CGI रेस्पॉन्स इज बैक टू द वेब ब्राउजर. वो कहां पर शो करेगा ना, आपका वेब ब्राउजर में शो करेगा. व्हिच रैप द रेस्पॉन्स इन HTTP रेस्पॉन्स. HTTP रेस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द अगेन वेब ब्राउजर. अगेन वो वेब ब्राउजर में आपको रेस्पॉन्स देगा. क्लियर? आज्ञा सर. ओमकार, यस सर. अंकिता बुझेला? नो सर, बुझिगली. बुझिपाइल? नो सर. अच्छा, मैं आउथर देखो देखो. See that the figure I have sent you in your WhatsApp. Okay. Actually, it is not open. See that. Yes. So compare it with the written one. So in early development of HTML, the designer create a mechanism to permit a user invoke a program on the web server. Okay. जैसे कि क्या होता है, जावा में आप प्रोग्राम लिखते हो
उसके बाद आपका आउटपुट देखने के लिए आप इसको कंपाइल करते हो, कहां पर, जेबीएम में कंपाइल करते हो। लेकिन यहां पर जब आपका वेबसाइट का एप्लीकेशन आप बनाओगे, वो कंपाइल होगा और प्रोसेस होगा। वो कहां पर प्रोसेस होगा? इट इज प्रोसेस इन ए वेब सर्वर। क्लियर दिस लाइन, अंकिता? Yes. Yes, sir. So this mechanism is called as the CGI. ये जो mechanism मतलब this web application is executed in the web server. This mechanism is called as the common gateway interface. Okay. The Yes, sir. usually browser needs to send data to the CGI program on the server. Okay. So in the browser you are giving a data. In core Java application, you are giving a data in a what? In a form JFrame. In a JFrame, you are giving a data. So similar way, while you are designing a website application, you give a data in a web form. That is a JFrame. It is a web form. Clear? Again, sir. So what is the extension of .java. Java? Extension of web pages in Java is .java. The CGI specification define how the data package and sent in the HTTP request to the server. So when you are giving a request to the server, you are not one person that you are giving a request. At a time, multiple people giving a request. तो वो क्या करेगा, आप जब रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उसको एक पैकेजिंग करेगा, एक मॉड्यूल बनाएगा। मॉड्यूल बनाकर वो चेक करेगा आप कौन हो, आप किसके लिए, कौन सा डाटा के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आपका एक पैकेज मतलब एक पोर्टल बना देता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सीजीआई सेल। क्लियर? जी sir. Then the URL determine which CGI program to execute. Okay, तो when you are typing the address, जब आप गूगल लिखते हो, जब आप फेसबुक लिखते हो, तो फेसबुक सर्वर कॉल होता है। जब आप जीमेल लिखते हो, जीमेल का क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो आपके पास आता है। तो ब्राउजर में हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ब्राउजर में ये बोलता है, दिस लाइन इज सेइंग दैट द यूआरएल डिटरमाइन व्हिच सीजीआई प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। सो इन द यूआरएल, if I type the Google, then Google program is executed and displaying the result. If I print there Facebook, the Facebook program is executed and display to me. Okay, Yes, sir. so this might be a, the URL determine it might be a program or it might be a executable file. Executable file means which is already compiled, okay, and it is converted to a exe file. The CGI program purge the CGI data in the request process data and generate the response usually in the HTML form. So when you are taking a data from user, so it needs to be purging. Purging means it will convert. If it is a string data and if you want to go for a mathematical evaluation, so you cannot do the arithmetic operation with the string data. Suppose आप enter number 1 enter number 2 में आप 10 और 20 पास कर रहे हो, लेकिन 10 and 20 that you are taking from the user, it is a which data? It is a numeric data. It is a numeric data, but as you are taking from the screen, it is a string data. तो इसको मैनिपुलेशन करने के लिए अगेन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, तो दैट इज कॉल्ड द पर्जिंग। योर रिक्वेस्ट इज कन्वर्ट, योर रिक्वेस्ट इज ट्रांसलेट। जैसे कि जावा में आप क्या करते हो, पहले कंपाइलिंग करते हो, तो यहां पर पर्जिंग होता है। क्लियर? Again, sir. Then after purging, then it is generating the output. The CGI response is sent back to the browser. So after purging, you are getting your response, and that response is again back to the browser. The HTTP response is sent back to the browser. So this is the complete mechanism of CGI. Understood now? Yes, sir. So it is the actual process of your CGI application. Okay, again you have to connect.
The advantages and disadvantages of the CGI that we have to discuss. That program can be written in any programming language, although primarily it is written in the Perl language. The earlier we are using a Perl language. The CGI program with box doesn't crash the web server. If there is a box means error. It doesn't crash your